Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Suraiya Shahin and today I will deal previous year questions UGC NET English Literature. Every question from previous year question is very important from your examination point of view. I have already dealt the questions till 40 number question and today I will deal from question number 41 and these questions are from June 2012 paper 3. Now the question is Goethe's Faust, part 1, scene 1 opens in, and options are first option is heaven, second is hell, third is forest, and fourth is Faust's study. Right? Then Goethe's Faust, part 1, scene 1 opens in Faust's study. So your correct answer would be D. Right? Your correct answer would be here D. Faust's study. Coming to the next question, is it their single mind sized skulls or a trained body or genius or a nest full of brats gives their days this bullet and automatic purpose thrushes? In the above lines, what does their refer to and what quality of there does the poet speak of? यानी इसमें क्वेश्चन में आपको देयर के बारे में पूछा जा रहा है, देयर किसको रेफर कर रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है. First option is human beings and their intelligence. Second option is the thrushes and their concentration in achieving what they set out for. Third option is the efficiency of the thrushes in getting at their prey. And the last option is all the above. Right. So there is used for the thrushes and their concentration in achieving what they set out for. And also it is used for the efficiency of the thrushes in getting at their prey. So you must know that thrushes, it is in Ted Hughes's poem, and thrushes, the word there refers to the thrushes and their concentration in achieving what they set out for. And third option, the efficiency of the thrushes in getting out at their prey. So the correct answer would be here D, 2 and 3. Right? Next question is find the odd woman are Belladonna, Eugenides, Typist, Mary, Madame Sorcerist, and the Ruin Bieber, Terraces, the Young Man, Carbuncular. इसमें से आपको ऑड वन दिया गया है जो भी वुमेन है. So you know that Madame Sorcery, Tiresias, these all are in T.S. Eliot's The Wasteland. So the odd is D, right? The Ruin Bieber. So the correct answer would be here the Ruin Bieber. And it appears the Ruin Bieber actually is a person who is a regular drinker of alcoholic beverages, and it appears in Philip Larkin's Church Going. So the correct answer would be here D. Coming to the next question, Wilkie Collins' novel The Moonstone tells the story of first option is a detective's exploits in Victorian England. Second option is a doctor's adventures in a Middle Eastern suburb. Third option is a fabulous yellow diamond stolen from an Indian shrine. And last option is illegal mining of diamonds in eastern UP during British rule. So here actually it tells the story of a fabulous yellow diamond stolen from an Indian shrine. This is about Wilkie Collins' novel Moonstone. It tells the fabulous yellow diamond stolen from an Indian shrine. So the correct answer would be here C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप. इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी पोएम का जो लाइन दिया जाता है सेंटेंस और उसका पोएट दिया जाता है, आपको उससे मैच किया जाता है. तो एट दैट पॉइंट यू मस्ट नो द पोएट एंड द पोएम. फर्स्ट ऑप्शन इज बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ. Second is Oh Captain, My Captain. Third is Two roads diverged in a wood. And fourth is So much depends upon. So you know, because I couldn't stop for death, actually Emily Dickinson wrote it, right? And Oh Captain, My Captain, Walt Whitman.
wrote. And two roads diverged in a wood, written by Robert Frost, and so much depends on it was written by William Carlo Williams. Right? So in that way, your correct answer would be here B. B. I mean 1 का C, 2 का A, 3 का D and 4 का B. Next question is here. Now stop your noses, readers, all and some, for here is a tune of midnight walk to come, Ozzy from Artisan Tavern, rolling home, round as a globe, and liquored every chink. Goodly and great he rails behind his link. In the above passage from Absalom and Achitable, लिंक मीन्स यहाँ मतलब जो लिंक दिया गया है इसका मतलब क्या होता है. फर्स्ट ऑप्शन इज अ कनेक्शन इन द कोर्ट, सेकेंड इज अ हायर्ड सर्वेंट हु कैरीज अ लाइटेड टॉर्च, थर्ड इज अ सोशल टाइप, फोर्थ इज अ रिच पैटर्न. So actually the link means a hired servant who carries a lighted torch, and it is in Dryden's Absalom and Achitophel, right? So the correct answer would be here B. Now next question is here. Which among the following is not a typical Indian English poem by Nissim Ezekiel? Nissim Ezekiel के इसमें से कौन सा typical poem नहीं है actually? How, first option is how the English lessons ended. Second option is the railway clerk. Third option is goodbye party for Miss Puspa Tish. And fourth option is the patriot. तो आपको पता होगा द रेलवे क्लर्क, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, द पेट्रियोट, दीज आर द टिपिकल इंडियन पोएम. एंड व्हाट इज नॉट हेयर एक्चुअली ये पूछा है कि इसमें कौन नहीं है. नहीं है हाउ द इंग्लिश लेसन्स एंडेड. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. मैच द करेक्ट पेयर. जॉर्ज एलियट, साकी, इमिली ब्रॉन्ट एंड मार्क ट्वेन. यानी कि आपको ये नेम दिए गए हैं और इनके जो है सरनेम वो आपको इसमें से मैच करने हैं एक्चुअली. आई मीन ये जो राइटर्स है ये सेकेंड नेम से भी जाने जाते हैं, तो ये आपको मैच करना है. तो आपको पता होगा जॉर्ज एलियट, शी इज नोन बाय मैरी एन एवेंस, राइट. ये साकी, एच एन मोनरो. साकी किस नाम से जाने जाते हैं? एच एन मोनरो. एंड इमिली ब्रॉन्ट यू नो इलीज बेल के नाम से जानी जाती है. एंड मार्क ट्वेन, सैमुअल लैंगोर्ड क्लेमेंस, राइट. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हेयर बी. ये होगा आपका करेक्ट आंसर. ओके, 1 का 2 एंड 2 का 4, 3 का 1 एंड 4 का 3, राइट. Next question is here. In Canto 17 of the Inferno, the monster Grayan represents. First option is fraud, second is usury, third is sloth, and fourth is gluttony. So in Canto 17 of the Inferno, the monster Grayan, it represents fraud. So the correct answer would be fraud. Next question is I.A. Richard's famous experiment with poems and his Cambridge students is detailed in Practical Criticism, a study of literary judgment. Richards was astonished by. First option is the poor quality of his students' stock responses. Second option is the very astute remarks made by his students. Third, the non-availability of poems worthy of classroom attention. And fourth is the success of his experiment. Actually, he was astonished by the poor quality of his students' stock responses. So the correct answer would be A here. Next question is based on the following description identify the text in reference. कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी दिया जाते हैं कि आपको टेक्स्ट दिया जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा प्ले से है या पोएम या फिर नॉवेल से है. तो यहाँ रेफरेंस दिया गया है. दिस इज अ प्ले इन विच नो वन कम्स, नो वन गोज, नथिंग हैपेंस.
In its opening scene, a man struggles hard to remove his boot. The play was originally written in French, later translated in English. It was first performed in 1953. इतना ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है. अगर इसमें से आपको दो डिस्क्रिप्शन इसके बारे में अगर पता होगा तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे आपको पता होगा कि इट वॉज वेटिंग फॉर गोडोट, राइट. इट वॉज वेटिंग फॉर सैम्यूल बेकेट रिटन बाय. तो इसका क्या हुआ था, इसमें ये स्टेटमेंट था, नो वन कम्स, नो वन गोज, नथिंग हैपेंस. फिर इसमें दिस प्ले वाज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड फर्स्ट परफॉर्म इन 1953. राइट. इसमें से एक दो या डिस्क्रिप्शन भी आपको पता होगा तो आप आसानी से ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर वेटिंग फॉर गोडोट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one of the following Canterbury Tales is in prose. Identify. एक प्रोज में भी है, कौन सा है इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन इज द पार्डनर्स टेल, द पार्सन्स टेल, द मोंक्स टेल, द नाइट्स टेल. किसका टेल है प्रोज में इसमें से? इट वॉज पार्सन्स टेल. पार्सन्स टेल वॉज इन प्रोज. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हेयर बी. यू करेक्ट. Next question is here. In his distinction between imagination and fancy, Coleridge identifies the following. फर्स्ट ऑप्शन, इसमें मतलब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो ऑप्शंस है इसमें से कौन इमेजिनेशन को रेफर करता है, कौन फैंसी को करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स in order to recreate. Second option is it has aggregative and associative power. Third is it plays with fixities and definities. And fourth is it has shaping and modifying power. तो इसमें कौन किसको रेफर करता है? एक्चुअली इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट. तो ये जो है एक्चुअली यह, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से दो ऑप्शन जो है वो फैंसी के लिए है और दो है एक्चुअली वो इमेजिनेशन के लिए है, राइट. तो यहाँ पर जो है आपका इट हैज़ एग्रीगेटिव एंड एसोसिएटिव पार्ट, इट प्लेस विथ फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज. तो यह आपका हो गया, किसके लिए हो गया? यह फैंसी के लिए. अब आपका ए आर डिसॉल्व, डिफ्यूज, डिसिपेट्स एंड इट हैज़ शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पार्ट, इट इज़ फॉर इमेजिनेशन. तो ये आपका आंसर सी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूलिया क्रिस्टेवास इंटरटेक्सुअलिटी डिराइव्स फ्रॉम सोसियोर्स डीप स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑप्शन इज सोसियोर्स डीप स्ट्रक्चर, सेकेंड इज चॉम्स्कीज डीप स्ट्रक्चर, थर्ड इज बाख्तेंस डायलोजिज्म एंड फोर्थ इज डेरिडाज डिफरेंस. एक्चुअली जूलिया क्रिस्टेवास इंटरटेक्सुअलिटी डिराइव्स फ्रॉम नोम चॉम्स्कीज डीप स्ट्रक्चर and it's Bachte and Saussure, right? It's Bachte and Saussure, not Noam Chomsky. So your correct answer would be here B. Your correct answer would be here B. Means Julia Kristevas intertextuality derives from Saussure's deep structure and Bachtin's dialogism. तो A and C है, तो आपका B में A और C है. So your correct answer would be here B. Thank you. I will deal the next questions in the next video.